numbers. तो अभी हम लोग को ये देखना है कि जो 121 है, दिस इज इक्वल टू 22 स्क्वायर अपॉन 1 + 2 + 1, 1 2 3 2 1 इक्वल्स 3 3 3 होल स्क्वायर and upon 1 + 2 + 3 + 2 + 1, then 1 2 3 4 3 2 1 equals 4 square 4 4 4 and 4 times 4 square 4 times 4 whole square divided by 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1 and so on. So you can do this for this number and for this number too. Like, which of the following triplets are Pythagorean? So for Pythagoras theorem we can think like, if the triplets are here 3 4 and 5, so the square of the two numbers which is less than the third number will always equal to the square of the third number. Like 3 square plus 4 square must be equal to 5 square, like 6 square plus 7 square, like 6 square plus 7 square must be equal to 8 square, must be equal to 8 square. If this is not, then this is not the Pythagorean triple. Like 10 24 26, in which 10 and 24 are the numbers which is less than 26, so 10 square plus 24 square must be equal to 26 square. Same 2 3 and 4, 2 square plus 3 square must be equal to 4 square. Let the smallest even number be 2m and find m from it, then find 2m, m square minus 1 and m square plus 1. If you get the triplet, it is Pythagorean, otherwise not. Now for square root, तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था कि अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम लोग को स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का हो, तो उस केस में हम लोग कैसे करेंगे? तो उस केस में जो रेडिकल है, तो अगर उसका इंडेक्स अगर 2 है तो स्क्वायर रूट के फॉर्म में होगा. फॉर एग्जांपल √16 = 4, तो -4 square = 16, so therefore square root of 16 can be -4 also, but here we are taking only positive square root. So we can see this example: 7 square 49, √49 = 7, then 5 square 25, √25 = 5. So these are the absolute perfect square of 49 and 25, and we can say this is the principal square root of 25 and 49. Like 8 square = 64, then square root of 64 = 8, and in general we can see m square = n, then √n = m. So square root of the given natural number n is that natural number m whose square is n. So in first case we can see the square root of an even number is even, the square root of an odd number is odd. The symbol of the square root is this. If a square root of b, if a is the square root of b, then b is the square of a. ये भी simple है. Like if √64 = 8, then 8 square must be equal to 64. Then in case if √n = m, then m square must be equal to n.
here is the pattern, like 1 plus 3 equals 2 square, 1 plus 3 plus 5 equals 3 square, 1 plus 3 plus 5 plus 7 equals 4 square, and so on. So these are the sum of first n odd natural numbers. Now here, finding square root of a number by a repeated subtraction method. तो इस केस में कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? तो ये इंपॉर्टेंट है देखना कि इफ़ वी हैव रूट 9 then 9 minus 1 equals 8, then 8 minus 3 equals 5, and then 5 minus 5 equals 0. सो 9 minus 1 equals 8 में जो 1 है ये फर्स्ट ऑड नंबर है. सेम 8 minus 3 में ये सेकेंड ऑड नंबर है. सेम 5 minus 5 में ये थर्ड ऑड नंबर है. तो इस केस में हम लोग ये देख सकते हैं कि इफ़ बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9 द सक्सेसिव नंबर जो कि ऑड होगा वो 1 3 एंड 5 के फॉर्म में होगा, एंड ऑब्टेन 0 इन ईच स्टेप 3. So if this is, then root 9 equals 3.